So, good evening, students. So, today we are going to start the topic MSCI 021 Introduction to Information Security. But before starting, let me tell you that this is a very simple paper, and the marks that it carries is only 50 marks. Let me write it over there. Maximum marks it carries. Maximum mark it carries is 50, and it is very easy to score. And because this is the first paper of PGDIS / MSCIS. Okay, this is the first paper, and it is a very simple paper. If you go through my lectures carefully, then you can easily crack the paper. It's not a very big thing. Okay, so you understood that it's a paper that carries only 50 marks, and it is a paper of PGDIS / MSCIS, but it is common to both the courses. Okay, the PGDIS का जो first two semesters, these are common to both PGDIS and MSCIS. These are common. First two semester is common. Okay. After that, after 1 year, you get the PGDIS certificate, and for MSCIS, you have to carry forward with 2 more semesters, third semester and fourth semester, and you get the MSCIS certificate. It's like that. तो PGDIS जो टॉपिक है, PGDIS जो पेपर है, इट्स PGDIS का जो कोर्स है, it's not that easy, but we start with a very easy paper. This paper is easy, MSCI 021. This paper is simple. Okay, this paper is simple, but when you go for MSCI 022, 023, 024, when you proceed towards the other papers, it becomes step by step difficult. Okay, and in the third semester, whoever is going for MSCIS, the third semester the level becomes difficult. I'm telling you. Okay, so but till then, those who are in PGDIS, if you follow my lectures. And the most of the thing, just follow my lectures. You do not need anything. Just follow my lectures, prepare your own notes, and go for the examination, and you get the best. That's the thing about PGD, this paper. Introduction to Information Security. Along with that, we have also done the practical part for all the papers, and the practical parts are also available over here. You can go for the practicals also. If you go in this way, I think it will be a roller coaster ride. If you have taken the course will be a roller coaster ride. If you go through my lectures, and that's all, and you do not need anything. So without any further delay, so let's start the course. Okay. First and the most important is the question that comes in the paper, that is, what are the benefits of internet? Basic question. ये तो सबको पता होता है benefits क्या होता है internet के. Explain 3 data transmission modes. Okay, these are the questions. So you must have gone if you have done BCA or if you have done BSc Computer Science or whatever, so you must have gone through a computer networks paper. Computer networking paper. So networking का first जो topic है, what are the benefits of internet and what are the data transmission modes? This is the question. And okay, so without any further delay, let's start with the answer. Benefits of internet क्या? Information access. First and the most important is the information access. Wherever the information it is kept in the internet, you can get that information. Earlier क्या होता था? We have to buy books for the information. Okay, we have to buy different books. तो उसमें क्या हो? अभी हम cheap हो गए. You can get the information very easily. Earlier क्या होता था? Whatever information, whatever we search, whatever we write, so that is the type of, you can say, research oriented. Now there is no research oriented. You just write the answer, write down the question or your query, and you get the answer. That's the thing. So you can get information from anywhere. Okay, the internet provides instant access to an extensive range of information and knowledge on virtually any topic. कोई भी topic ले लो. This facilitates education, research and learning, allowing individuals to stay updated with current events and global trends. Hope ये तो clear हो गया. Number 2 is communication. The internet has revolutionized communication by enabling real-time interaction through email. email के through instant messaging and social media platform. इससे क्या हो? Communication क्या हो गया? बहुत अच्छा हो गया. It has enhanced, you can say. This greatly enhanced global connectivity, making it easier for people to stay in touch with friends, family, and colleagues across the world. Across the world means you can communicate very easily. Third is e-commerce and online business. Whatever, like Flipkart and Amazon. Okay, there is big billion days or what. So you can, whatever you want to do, if you want to get it at a cheap price, then you have to wait for big billion days. Otherwise, if you want it at any time,
रात को at 12 a.m. You are planning to buy something, तो you just order it and it comes in a day or two. It's like this. तो बहुत easy हो गया. You do not have to go to the market and search here and there for anything. You just open that app and you search it and you get it. Okay, you get the variety of things, variety of qualities. Okay, earlier क्या होता था, कोई whatever you want to buy, तो आपको 10 दुकान दिखते हैं, 10 types of markets you have to search, so you have to search across the city. So okay, so that has been that thing is gone. Okay, now through e-commerce you can find out everything. Okay, the internet has transformed the way business operate, allowing for the development of e-commerce platforms where products and services can be bought and sold online. This has created new opportunities for entrepreneurs, business to reach a global market and conduct transactions more efficiently. Okay, now I'm telling about that buying things. Now you can sell also. You do not have to buy a big shop or something like that. If you have a house, you take one room and you keep the things over there and you buy it from house only. You sell it from your house only. You do not have to go anywhere. क्या बोले, किराए पे कोई चीज़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं, कोई रूम या कोई शॉप लेने की ज़रूरत नहीं है. You can do it from house only. That's the thing. So that is also the big benefit of e-commerce and online business. Fourth is entertainment and media. The internet offers a vast array of entertainment including streaming services. OTT आजकल आ गए. OTT में इतनी सारे movies, इतनी comedy, everything. Whatever you want to see, everything is over there. Okay, तो कितने मज़ेदार हो गए. Online gaming, social media. It has also democratized media production, enabling individuals to create and share content. जैसे आजकल बहुत सारे अपने कंटेंट लोग शेयर कर रहे हैं. बहुत सारे इस टिकटॉक होते थे पहले, अभी इंस्टाग्राम है. तो ओके, तो they can share anything, whatever they wish. Okay, even the garbage, people are also sharing the garbage also. They are creating garbage and they are sharing the garbage. I can say that it is a garbage house, you can say. Means those who do not have talent, they are sharing their garbage. So this is the thing happening. Please do not mind. Okay, please do not take it on yourself. That's the reason like this. It's a normal thing because I have seen so many people are doing all these things. Sharing the content, okay, sharing content and sharing anything. If they do not have talent, still they are sharing. Forcibly, they want to show the world that they are not talented. That's the thing. फिफ्थ इज ग्लोबलाइजेशन एंड कोलैबोरेशन. आप क्या ग्लोबलाइजेशन हो गया तो क्या हो, किसी नए कंपनीज हर जगह किसी न किसी से कोलैबोरेट करके यू कैन स्टार्ट बिजनेस, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. Okay, you can do a lot of things, cooperation, collaboration, enabling individuals and organizations from different parts of the world to work together on projects, research and initiatives. They accelerate innovation and the development of new technologies, fostering a global community of knowledge, sharing and collaboration. Okay, now उसके बाद डेटा ट्रांसमिशन मोड्स. आप डेटा ट्रांसमिट करने के क्या क्या मोड्स होते हैं? एक सिंप्लेक्स होते हैं, एक हाफ डुप्लेक्स होते हैं, एक फुल डुप्लेक्स होते हैं. सिंप्लेक्स में क्या होता है? ओनली वन वे. There is no two way. Okay, so this is simplex. In this way, data transmit unidirectionally, allowing information to flow in only one direction. One device is the sender and the other is the receiver with no exchange of roles. Okay, an example is a keyboard sending data to a computer which only receives the information. That's all. Number two is a half duplex. Means data can be transmitted in both directions, but only one direction at a time. It's a walkie-talkie is an example where one person speaks while the other listens and then they switch roles. So this is a half duplex. Full duplex जैसे फोन में हम लोग कॉल करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, that is a full duplex. माने both data is transmitted in both directions at the same time. Examples include telephone conversation and internet video calls where both parties can speak and listen simultaneously, facilitating real-time communication. This is the thing. So these are basic things, basic concepts that are being asked in the paper. So you can go through this lecture, these topics, these points. You write it in your sheet of paper and just do it. Now how to study? Let me tell you how to study. पहले ये मत करो पेन और पेपर लेके बैठ गए. पहले what you do, पूरे लेक्चर को चलने दो. लेक्चर को just listen, just look what I am doing. Okay, after that you take a pen and paper और फिर एक बार repeat करो आप लेक्चर को and you see the magic. You do not have to do it again. That's the thing. उसके बाद एक्सप्लेन OSI मॉडल. तो OSI मॉडल जो है एक मॉडल है, ठीक है. तो वेयर मीन्स डिफरेंट कंप्यूटर्स कैन कनेक्ट. दे हैव ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन. कोई भी सिस्टम कनेक्ट हो सकते हैं.
is a conceptual framework that standardizes the functions of telecommunication computing system into 7 distinct layers. 7 layers है. कौन से layer है? इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसके 7 layers है, 7 distinct layers है. 7 layers को इसको आप ऐसे याद कर सकते हो. Please do not touch Steve's pet alligator. ओके यार, एलिगेटर से क्या होगा? एप्लीकेशन लेयर. पी से क्या होगा? फिजिकल लेयर. डी से क्या होगा? डेटा लिंक लेयर. देखो सी है लेयर 1 फिजिकल लेयर, पी से फिजिकल लेयर हो गया, डी से डेटा लिंक लेयर, एन से नेटवर्क लेयर, टी से क्या? ट्रांसपोर्ट लेयर. हाँ, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से सेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन लेयर, ए से एप्लीकेशन लेयर. सी इज देयर. फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, session layer, presentation layer, and application layer. Okay. Now one more is there. Okay, model that is TCP/IP. TCP/IP that consists of 4 layers. What happens? How many layers are there? 7 layers. 7 layers मतलब क्या होगा? कुछ layers क्या? They are repeating the same task. So those has been cut and it is converted to 4 layers. The TCP/IP का you do it on your own. This is very important. TCP/IP you do it. ओके, तो फिजिकल लेयर का फंक्शन क्या है? दिस लेयर डील्स विद फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस. कनेक्शंस होते हैं और कुछ नहीं होता है. हार्डवेयर रिक्वायरमेंट लाइक ट्रांसमिटिंग डेटा इंक्लूडिंग केबल्स, कनेक्टर्स एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स. फिजिकल लेयर का यही काम है. डेटा लिंक में क्या? दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन 2 नोड्स. रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. बस दैट्स इट. डेटा लिंक लेयर का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेटवर्क लेयर क्या कहता है? फैसिलिटेट डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स. डेटा में द बेस्ट पाथ. ये डेटा में द बेस्ट पाथ फॉर डेटा ट्रांसमिशन. बस ये आपको याद रखना, बेस्ट पाथ फॉर डेटा ट्रांसमिशन. इसके लिए नेटवर्क लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर एंश्योर द डेटा इज डिलीवर्ड एरर फ्री एंड इन द करेक्ट सीक्वेंस. एरर फ्री एंड इन द करेक्ट सिस्टम. यहाँ पे भी देखो क्या हुआ? रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. ऑलमोस्ट सेम बात ही बोल रही है. ठीक है, डेटा इज डिलीवर्ड एरर फ्री एंड इन द करेक्ट सीक्वेंस. दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर. सेम ही है. सेशन लेयर क्या? दिस लेयर एस्टैब्लिशेस, मेंटेन्स एंड सिंक्रोनाइजेस द इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिकेशन सिस्टम. इट मैनेज सेशंस बिटवीन एप्लीकेशन अलाउइंग देम टू एक्सचेंज डेटा. सेशंस होते हैं. एग्जांपल ले लो सेशन लेयर का. आप यदि एक एग्जांपल लेने से एग्जांपल यू कैन टेक ओटीपी. ओटीपी का एक टाइम ड्यूरेशन होता है. आफ्टर द टाइम ड्यूरेशन व्हाट हैपेंस? इट इज ओवर. ओके, उसके बाद फिर एक ओटीपी आएगा तो सेशन इज क्रिएटेड. ओटीपी से क्या होता है? एक सेशन क्रिएट होता है. अंडरस्टूड? उसके बाद क्या होता है? अगेन यू हैव टू गेट ए न्यू ओटीपी इफ यू डू नॉट यूज इट. So you can say in that way, session layer allowing them to exchange the data. Presentation layer, this layer is responsible for formatting and presentation of data. It encrypts, okay, and compress data for the application layer to understand. Compress data को compress करते, encrypt करते. This is all done in the presentation layer. Application में क्या होता है? Application layer is what we see in the internet. आपके सामने जो दिख रहे हैं, that is application layer. The application layer is the closest to the end user. जब हम लोग एंड यूज़र के सामने जो होता है. प्रोवाइड नेटवर्क टू एंड यूज़र एप्लीकेशंस. इट सपोर्ट्स कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विस सच ईमेल, फाइल ट्रांसफर, एक्सेस टू शेयर रिसोर्स. ये सारे काम होते हैं. ओके, इसका डायग्राम मैंने ऐसे बनाया हुआ है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 करके. यू कैन गो थ्रू दैट. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज CSMA CD. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. CSMA CD is what carrier sends multiple access with collision detection. Okay, what is that? Let us understand that. Explanation. How CSMA CD works. Carrier sends. Before sending data, a device using CSMA CD listens to the network to check whether other devices are currently transmitting data. वो रास्ता को चेक करते हैं. They see the path. जब कोई और डेटा ट्रांसफर हो रहा है, यदि नहीं हो रहे, if the network is free, then the device can transmit data. Otherwise, it waits for the network to become idle. जब तक फ्री नहीं होगी. जैसे if you want to cross the road, you see on both sides. Yeah, if nothing is coming, no car, no bus, nothing is coming, then you cross the road. Otherwise, you wait till the road is free. This is the thing. Okay. Otherwise, there will be collision. There will be accident. That's it. Multiple access means multiple devices share the same communication channel. Obviously, multiple devices can share. They contend for access to the channel and try to transmit the data when the channel is idle. सब कोई access कर सकता है उसको. But when the channel is idle, keep in mind. Collision detection. In the event that two devices attempt to transmit data, दो लोग एक ही साथ ट्रांसमिट करना चाहते डेटा एट द सेम टाइम एंड कोलिजन ऑफ करते. डिवाइस डिटेक्ट द कोलिजन. डिवाइस क्या करता है? कोलिजन को डिटेक्ट करते हैं. आफ्टर कोलिजन डिटेक्ट द डिवाइस स्टॉप्स ट्रांसमिटिंग. जाना बंद करते, वेट फॉर ए रैंडम टाइम पीरियड
and then try to resend the data. Wait करते थे, wait until they wait for some time and then they try to send the data. So that is collision detection. Hope you clear हुआ. तो CSMA क्या होता है? Introduced to handle data collisions that occur when multiple devices attempt to transmit data simultaneously on a shared network. It was crucial in early Ethernet network. पहले ये सब होते थे. तो दिस यही आपको लिखना है. ये जो 3-4 पॉइंट लिखा है ये आप लिखना है. ये लिखोगे तो काफ़ी है. And write to the point. Do not write extra. You will lose marks. I am telling you. What is SNMP? Simple Network Management Protocol. ठीक है. It is used for monitoring network devices. किस लिए यूज होता है? It is used for monitoring network devices such as routers, switches, printers and more. उसके लिए मॉनिटरिंग करने के लिए काम आते हैं. ठीक है. Especially for monitoring network devices. That's all. Allows network administrator to monitor network performance, find and solve network problems, and plan for network growth. The other thing. And now, what are the components of SNMP? Components. Number 1 is managed device. Number 2 is agents. Number 3 is network management system. Number 4 is management information base. Number 5 is SNMP management protocol. These are things. तो आप इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. शॉर्ट में आप करोगे द वे आई एम सेइंग इन दैट शॉर्ट आपको करना है बिकॉज यू पीपल आर वर्किंग. तो फिर आप लोग को जितने शॉर्ट में वो करवा के एंड यू शुड गेट द बेस्ट मार्क्स. दैट्स माई मोटिव. दैट्स द थिंग. नाउ मैनेज डिवाइस. ये क्या होता है? दिस आर द नेटवर्क डिवाइसेज दैट आर मॉनिटर्ड एंड मैनेज बाय यूजिंग SNMP. फॉर एग्जाम्पल राउटर्स, स्विचेस, सर्वर्स, प्रिंटर्स एंड मोर. Those are kept in monitoring. These are always monitored. Managed device contain SNMP agent which collects and stores management information. वो क्या करता है? एजेंट क्या करता है? वो collects information, okay, and makes the information available to the SNMP manager. Okay. Number 2 is agent. Agent क्या होता है? Agents are software modules residing on a managed device. They are responsible for collecting and maintaining management information. जो भी डेटा होता है they collect it and keep it as well as making the information available to SNMP managers using the management information base. मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन बेस में सारे डेटा होते हैं एंड दैट इज बीइंग शेयर्ड टू द मैनेजर्स, SNMP मैनेजर्स. ओके. थर्ड इज नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम. दीज आर द सिस्टम दैट रन द SNMP मैनेजर सॉफ्टवेयर एंड आर यूज्ड टू मॉनिटर एंड कंट्रोल मैनेज डिवाइस. ओके. दीज आर यूजफुल इन रनिंग. सिंपल. NMS क्या होते हैं? रिट्रीव्स एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मैनेज डिवाइस एंड कैन इशू कमांड्स टू मॉडिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस डिवाइसेस. क्या करना है, क्या नहीं कॉन्फ़िगर करना है, रिकॉन्फ़िगर करना, वॉट एवर, तो वो ये बोलते हैं. ठीक है. दिस NMS नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम. नंबर 4 इज मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन बेस. इट इज़ ए वर्चुअल डेटाबेस जहाँ पे सारे डेटा होते हैं. इट इज़ ए वर्चुअल डेटाबेस कलेक्टिंग कंटेनिंग ए कलेक्शन ऑफ मैनेज्ड ऑब्जेक्ट. जो भी होते हैं मीन्स राउटर, स्विचेस, हब्स, जो भी इंफॉर्मेशन होता है इट इज़ केप्ट ओवर देयर इन दिस वर्चुअल डेटाबेस. These objects are organized in a hierarchical structure and represent various parameters of the managed device. Okay. Fifth is SNMP management protocols. These protocols are used for communication between NMS and the managed devices. The key protocol including SNMP, which is used for collecting and managing information. Data collect करना और उसको क्या करना, उस डेटा से देखना is everything is working properly. If it is not working, तो that has to work properly. उसके लिए steps लेते हैं. Simple. नाउ वी कम टू द नेटवर्क सिक्योरिटी पार्ट. ओके. ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट थे, थ्योरी थे जो सबको आप लोग को पता होना चाहिए. यदि इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द नेटवर्किंग पेपर तो यू नो ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. तो एक्सप्लेन 4 प्राइमरी क्लास ऑफ थ्रेट्स फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी. एक मैंने ले लिया मैलवेयर एंड वायरसेस. नंबर 2 टेकन साइबर अटैक. नंबर 3 इनसाइड थ्रेट्स and 4th unauthorized access and authentication issues. देखते हैं हम step by step. Let's go. Malware and virus. Malware refers to any software specifically designed to disrupt, damage or gain unauthorized access to a computer system or network. उसको malware बोलते हैं. This category includes viruses, worms, Trojan horses, ransomware, spyware and adware. Malware can spread through various means such as email attachment, infected software or compromised websites and cause significant damage to the network system including data loss, system corruption and unauthorized access to sensitive information. होप ये तो समझ में आ गया. सिंपल प्लेन लैंग्वेज में है, इसको कुछ समझाने का है नहीं. ओके. तो बस malware क्या होता है? इट इज़ यूज टू डिसरप्ट, डैमेज और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस. ये आपको याद रखना. दिस इज द मेन पॉइंट. आपको बुलेटिन्स करके यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स बुलेटिन्स ऑन द बुलेटिन्स. नंबर 2 साइबर अटैक. साइबर अटैक में क्या होता है? इनका वाइड रेंज ऑफ मैलिशियस एक्टिविटीज
that aim to disrupt, damage or gain unauthorized access to a computer system or network. जैसे होता है DDoS, ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक. ओके, एक होता है फिशिंग अटैक, एक होता है मैन इन द मिडल अटैक, एक होता है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक. दीज आर द अटैक्स साइबर अटैक्स में. मैन इन द मिडल क्या होता है? somebody is there in between. Suppose A and B are sharing information. One second. Wait for a second. हाँ, ये जो मैन इन द मिडल अटैक है, इसमें क्या होता है? ए और बी दो बंदा है, ठीक है. दे आर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन टू ईच अदर. हम नेक्स्ट आगे के पेपर्स में इसकी मैथमेटिकल वर्जन भी पढ़ेंगे. ओके, एंड बी आर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन टू ईच अदर. दे वांट टू चैट विथ ईच अदर. नाउ पी इज अ पर्सन. वो क्या होता है? इसके बीच में है. वो क्या करते हैं? इसको ए और बी को पता नहीं कि बीच में पी है. ये क्या करते हैं? ए का इन्फॉर्मेशन लेते हैं और खुद रिप्लाई कर देते हैं. ये बी का इन्फॉर्मेशन लेते हैं और खुद रिप्लाई कर देते हैं. ओके, तो तब दिस इज नोन एज द मैन इन द मिडल अटैक. दे कैन गिव एनी इन्फॉर्मेशन. वैसे क्या होता है? इससे क्या होगा? पी कैन गेट द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. दे कैन स्टील इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. फिशिंग अटैक क्या होते हैं? फिशिंग अटैक जैसे एग्जांपल ले लो, आईफोन 15 इज देयर टुडे है. दिस डेज आईफोन 15 इज इन ट्रेंड. आप बोल देंगे आईफोन 15 यू कैन गेट इट फॉर 30,000. क्लिक दिस एंड यू गेट इट फॉर 40,000. बहुत लोग क्या करते हैं? इफ दे थिंक दैट 40,000 मिलेंगे, लेट्स क्लिक इट. दे क्लिक इट एंड दे गेट एंड द अटैकर गेट्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन, अबाउट द whoever clicks, and here they can do phishing attacks. This is known as phishing attack. इस तरह के बहुत सारे अटैक्स हैं. तो वी लर्न ऑल दिस थिंग्स. एसक्यूएल इंजेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, ऑल दिस थिंग्स वी विल लर्न इन सम टाइम in the next papers, coming papers. Number 3 is insider threats. Insider threats refers to securities that originate from within an organization. Insider मतलब अंदर की, तो within an organization, from within an organization. This part you should point it out. Okay, inside an organization. These threats can be used by current or former employees, contractors, or business partners who misuse their authorized access to the network for malicious purposes. Okay. Inside threats can include data theft, unauthorized access to sensitive information, intentional sabotage, or accidental breaches due to negligence or lack of awareness. So these are the things. ये तो आपको समझ में आ गया. Data theft, unauthorized access to sensitive information. कोई बंदा क्या, they want to sell the information, whatever the important information they want to sell it to the people outside the organization. तो ये सारी चीज़ें यहाँ से होती हैं. Inside the organization जो भी होते हैं, they do it intentionally. Okay, that's the thing. Number 4 is unauthorized access or and authentication issues. Unauthorized access क्या होते हैं? आपके पास यूज़र पासवर्ड नहीं है एंड यू वांट टू गेन एक्सेस टू दैट थिंग, तो है फोर्सिबली, तो उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है? ऑकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल और एंटिटी गेन एंट्री टू ए नेटवर्क विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन. आपके पास परमिशन नहीं है, स्टिल यू वांट टू गेन एक्सेस टू दैट इज अनऑथराइज्ड एक्सेस. This can result from weak authentication mechanism such as default or easily guessable passwords. जैसे पासवर्ड आपने मोबाइल नंबर रख दिया, पासवर्ड आपने अपना नाम योर नेम, यू केप्ट योर नेम एज द पासवर्ड. इस तरह की चीज़ें रखोगे तो फिर इट इज़ वेरी इजी टू गेन एक्सेस. अनऑथराइज्ड एक्सेस वेरी इजी हो जाते हैं. दीज आर द थिंग्स. ओके, तो दीज आर द क्लासेस. ये क्या है? दीज आर द प्राइमरी क्लासेस ऑफ थ्रेड्स. यू कैन से प्राइमरी क्लासेस ऑफ थ्रेड्स. देन व्हाट आर द रीजन्स फॉर हैकिंग? हैकिंग करने जो लोग हैकिंग सुन के, मैं भी जब छोटा था 9th 10th या 11th में थे, हैकिंग खूब सुनते थे. हैकिंग हैकिंग कर रहे या मूवी देख रहे, वी हैव सीन दैट हैकिंग इज डन. हैकिंग कर रहे, ऐसे कीबोर्ड में टच कर रहे और सारे हैक करके सारे इन्फॉर्मेशन, सारे पैसे ले. सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है. ओके, लेकिन इट्स नॉट दैट ईजी ऑल्सो. हैकिंग इज नॉट दैट ईजी. You need a lot of things. Mathematics should be should be in your control. You should know networking. You should know programming. Everything you should know to do hacking and all these things. तो पहले तो बहुत अच्छा लगता था, ठीक है, लेकिन चीज़ that is a different thing. तो यहाँ पे पूछ रहे what are the reasons for hacking? तो जो मैं बचपन में सोचता था, those are the reasons. I'm telling you. Financial gain. Many hackers engage in cyber criminal activities to make money. This can involve steal financial information, credit card numbers, or personal data that can be sold on the black market. They may also target business and organization to extort money or demand ransomware payments. सारे बातें मैं नहीं सोचता था. जैसे ब्लैक मार्केट,
extort money. I was not thinking like that. Means information मिल जाएगा, a lot of money is there in the bank. Okay, I can take some money from there into my account. ये सब movies में देखते थे. We used to see watching the movies, and we used to think like that. Like one movie was there, Fida, in 2000s, in 2001 or 2, that movie came. So we have seen, and we thought, oh, such an interesting thing, we can do it. Okay, we used to think like that. We can be famous, and police can respect us. All this, ये सब माने उल्टे पुल्टे चीजें हम लोग सोचते थे. Understood, but it's not the true thing. Okay, तो एक होता है financial gain. Number 2 is political or ideological motivation. Some hackers are driven by political or ideological agendas. They may target government institutions, corporations, or individuals to make a statement, promote a particular ideology, or create a social or political disruption. एक परेशानी एक प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए भी हैकिंग किया जाता है. ओके, नंबर 30 एस्पियोनेज एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग. यहाँ पे क्या है, नेशन स्टेट्स एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज engage in hacking to gather sensitive information from other countries, organizations. They may include stealing military or industrial secrets, intellectual property, or confidential data. Number 4 is revenge or retaliation. In some cases, hacking can be motivated by desire for revenge. ठीक है, all the negative things are over here. But hacking के बहुत सारे positive things भी होते हैं. Okay, like ethical hacker, they have ethical मतलब क्या, ethics जिसके होते हैं. They are going to hack, but with ethics. So it is different. It is on the positive manner. और ये क्या है? This is black hat hacker. You can say black hacker. ये जो बातें हो रही है, black hacker की बात हो रही है, especially. Individual groups may target specific entity or division they believe have wronged them, aiming to disrupt the operations, leak sensitive information, and cause damage. 5th is personal challenge and recognition. इसमें क्या होता है? Some hackers are motivated by the challenge of breaking into secure systems. They may hack into systems simply to prove their technical skills or to gain recognition within the hacker community. Recognition के लिए भी लोग करते हैं, for recognition, to gain recognition. 6th is cyber warfare and terrorism. Nations and terrorist organizations may engage in hacking as part of their broader strategies to destabilize or disrupt their adversaries. इसमें क्या होता है? Launching cyber attacks on critical infrastructure such as power grid, communication networks, or financial systems. तो ये सब भी होते हैं. Okay. 7th is cyber vandalism. Hackers may engage in activities that cause disruption or damage to system without any clear financial or motivational or political motivation. This include defacing websites, disrupting services, or spreading fake malware for the sake of causing chaos or inconvenience. Now the most important question, phreaking and privacy. Phreaking जो term है, it was used in earlier, not now. Okay, तो phreaking क्या होता है? It was originated in 1970 and refers to the practice of exploring or authenticating or manipulating the telecommunication infrastructure, particularly the public switch telephone network. पहले होता था ये अभी भी है public switch telephone network. तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ये लोग ये करते थे, मैनिपुलेट करते थे. यहाँ पे क्या होता है? Individuals who engage in phreaking typically seek to exploit vulnerabilities in the telephone to make free or unauthorized long distance call. पहले कॉल्स बहुत कॉस्टली होता था, फ्री में लॉन्ग डिस्टेंस कॉल करने के लिए ये सब एक्टिविटीज किया जाता है. दैट इज नोन एज phreaking. सिंपल phreak you can say. आपकी पॉइंट दैट अबाउट phreaking क्या है? phreaking इज अ सब कल्चर ऑफ हैकर्स वो फोकस ऑन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम. अब नहीं होते, अब लोग नहीं करते क्योंकि कॉल इज सो चीप. पहले क्या होता था? वेरी कॉस्टली. इट वॉज एक्सपेंसिव थिंग. Okay, phreakers also use various tools and techniques to exploit weakness of the telephone network. The primary objective of phreaking is to gain another to telephone services and features. उसके बाद क्या करते थे? लॉन्ग डिस्टेंस कॉल करते थे, बस दैट्स ऑल. एंड प्रिवेसी क्या है? इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स राइट टू कीप पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड डेटा confidential and secure. It is a broader and more general notion that goes beyond telecommunication and applies to all aspects of life, both in physical and digital world. फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड दोनों में होता है. फिजिकली प्राइवेसी की जरूरत है, डिजिटल वर्ल्ड में भी प्राइवेसी चाहिए. प्राइवेसी इज द राइट टू टूल हु हैज एक्सेस टू योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हाउ दैट इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड, शेयर्ड एंड स्टोर्ड. इट एनकम्पासेस वेरियस डायमेंशंस इंक्लूडिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड डिजिटल प्राइवेसी. Now key points about privacy. It is a fundamental human right and legal concept protected by laws and regulations in many countries. Yes, obviously privacy is everybody's right, everyone's right.
तो ये सारी चीज़ें यू टू गो थ्रू. इट कवर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन डेटा एंड द एबिलिटी टू मेक चॉइसेस अबाउट द डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल डिटेल्स. तो ये जो है हमारे बुलेटिन्स में ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे. Privacy is important for protecting individuals from identity theft, surveillance, data breaches, and other forms of unauthorized access. In digital age, privacy has become one significant concern due to the collection, use, and potential misuse of personal data by organizations and government. क्योंकि everything is there digital, everything is there on the internet. Okay, it can be misused. So these days, privacy is very important. Then the next question is explain 4 primary classes of threats to network security, difference in DOS and DDoS attack. 4 primary classes of threats हमने कर चुके. अब DOS and DDoS attacks के बारे में हम बात करेंगे. ओके, DOS and DDoS ये वाले. बाकी 4 primary classes हमने पहले पढ़ चुके. Primary classes of threats, DOS and DDoS. तो DOS क्या होता है? Denial of service and distributed denial of service attack. ये क्या होता है? DOS and DDoS aims to disrupt the availability of the network services by overwhelming the target system with a flood of traffic. The key difference between the two is the source of the attack. क्या होते हैं देखते हैं. DOS attack. In DOS attack क्या होता है? A single source is used to flood the target system with traffic, making it inaccessible to legitimate users. आपका स्लो कर देगा, सब कुछ स्लो कर देगा. फ्लड हो जाएगा तो क्या होगा? With a lot of means unuseful information. तो फिर क्या? You cannot get access to that. जैसे पूरा ट्रैफिक कर देंगे एक्चुअली, यू कैन से. तो ट्रैफिक होगा तो यू कैन मूव, यू कैन नॉट मूव अहेड ऑफ ट्रैफिक. द अदर थिंग. तो दिस इज डॉस अटैक, डिनायल सर्विस. और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? इज वॉज मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स ऑफन डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन. अलग अलग लोकेशन होते हैं. फ्लड तो होंगे लेकिन अलग अलग लोकेशन में फ्लडिंग करेंगे. तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस. डिनायल ऑफ सर्विस दोनों में है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या था? अलग अलग लोकेशन है, अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन. कॉन्सेप्ट इज सेम बट इट इज अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस. Now write short notes on multitasking, mainframe, SNMP, reconnaissance, SMART attack. Multitasking क्या होता है? Refers to the ability of operating system to execute multiple tasks. ये तो पता है आप लोग को. Seeking simultaneously on a single CPU, multiple tasks चल रहे हैं. Number 2 is mainframe. Mainframe मतलब क्या होता है? Are large, powerful or high performance computers used primarily by organizations for critical applications, bulk data processing and handling कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन. तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स होते ही हैं. दिस इज थिंग. हाँ, सो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मल्टीटास्किंग, मेन फ्रेम, एसएनएमपी, रिकॉग्निजेंस, स्मर्फ अटैक. तो मल्टीटास्किंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क. टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क उसकी बोलते हैं मल्टीटास्किंग. होप यू ऑल नो अबाउट इट. टू एग्जीक्यूट multiple tasks seemingly simultaneously on a single CPU. एक बंदा one person is working on different platforms or different executing different tasks at the same time. उसको that is known as multitasking. It allows users to run multiple applications or processes concurrently, giving the appearance that they are executing simultaneously. Second is mainframe. अब mainframe क्या? mainframe computers आप लोग when you were a kid, then also you have heard about it, mainframe computer. Actually, large, powerful and high performance computers होते हैं ये. Primarily used by organizations for critical applications, bulk data processing and handling complex computation. उसके लिए हम use करते हैं mainframes. They provide robust processing power, high storage capacity and excellent input-output capabilities. वो तो obviously high performance, okay, large, powerful होंगे तो obviously they can do all these tasks easily. Well, these type of things are used in banking, healthcare and government organizations. ये mainframes. Simple network management protocol I have already discussed. Okay. Now reconnaissance. Reconnaissance क्या होता है? First reconnaissance होता क्या है? जैसे टारगेट अटैकर है. अटैकर पहले क्या करता है? अटैक करने के पहले he takes all the information, he gathers all the information and about the target system or the network. ठीक है? तो all he gathers the information and then he attacks. Actually, when he is gathering the information, that is known as information gathering, passive information gathering, passive. Active नहीं, passive information gathering, such as scanning for open ports, identifying network services and collecting public available data. ठीक है, यह लेते हैं. उसके बाद क्या करते हैं?
attackers attack करते हैं. Okay, they gather the information, they gather useful information from those passive information. Okay, they gather the important information that helps in attacking the network or a person. तो उसको बोलते हैं reconnaissance. एक होता है स्मर्फ अटैक. ये सब आते हैं, स्मर्फ अटैक, रिकॉग्निजेंस, ये सब आते हैं पेपर में. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्मर्फ अटैक क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक. डिस्ट्रीब्यूट डिनाइल ऑफ सर्विस मतलब क्या होता है? सपोज आई वांट टू टेक द सर्विस ऑफ समथिंग, ओके, बट आई कैन नॉट टेक बिकॉज इट इज बीइंग फ्लडेड विथ वेरियस टाइप्स ऑफ मैसेजेस, या जैम हो गए, एक्चुअली आई कैन नॉट गो. Okay, पूरी ट्रैफिक इज इन फ्रंट ऑफ मी, तो आई कैन नॉट रिमूव द ट्रैफिक एंड गो. तो इस तरह की, लेकिन अलग अलग लोकेशंस में, तो उसको बोलते हैं स्मर्फ अटैक. इट इज अ टाइप ऑफ अटैक ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस. ओके, तो ये इसमें होते क्या? इन दिस अटैक द परपेट्रेटर सेंड्स ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इको रिक्वेस्ट पिंग करते टू आईपी ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस such as victims spoofed IP address as the source. Okay, the network then responds to this request sending a flood of replies. जब बहुत सारा आप रिक्वेस्ट करेंगे तो बहुत सारा रिप्लाईज भी आएंगे, तो फ्लड ऑफ रिप्लाईज आएंगे टू इन द विक्टिम्स आईपी एड्रेस, ओवरवेलमिंग द टारगेट नेटवर्क एंड कॉजिंग इट टू बिकम अनरीचेबल. तो ऐसे जब बहुत सारे रिप्लाईज आएंगे तो क्या होगा? अनरीचेबल हो जाएंगे, बिकॉज वी कैन नॉट गो थ्रू दैट, बिकॉज फुल ऑफ ट्रैफिक इज देयर. ट्रैफिक जब रहेगा तो फिर यू कैन नॉट ब्रेक द ट्रैफिक एंड गो एंड रीच द अदर थिंग. आप रीचेबल नहीं होगा, इट अनरीचेबल हो जाएंगे. तो दैट्स हैपन इन स्मर्फ अटैक. Implementing anti-spoofing measures and disabling IP-directed broadcast can help mitigate spoof attack. Okay, this is also important. You should write it. Now, differentiate between real-time operating system and embedded operating system. What is operating system hardening? Is a basic concept पूछे इन्होंने. Okay, embedded operating system. What is operating system hardening? Explain error handling with example. Explain synchronization attack. What is polymorphic virus? Explain. ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है. तो पहले वी शुड डिस्कस अबाउट द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज इन रियल टाइम. सिंपल. रियल टाइम मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस. अभी ऑनलाइन ही सब कुछ चल रहा है, एवरीथिंग. दैट इज रियल टाइम. सिंपल. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू सर्व सिस्टम दैट हैव स्ट्रिक्ट टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स. टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स होंगे. इट इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डेटा एज इट कम्स इन. जैसे ही आएंगे उसको प्रोसेसिंग करना है. सिंपल. विदाउट बफरिंग डिलेज. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स टाइम्स, making it suitable for applications such as robotics, industrial automation, and control systems. It ensures the tasks with higher priority are executed before lower priority tasks. Hope ये तो समझ में आ गया रियल टाइम. Now embedded operating system. ये क्या है? Is specifically designed to be used in embedded computer systems, which are part of large systems or machines. These systems often have limited resources and are dedicated for performing specific tasks. They are ready for performing specific tasks. Specific task के लिए हम embedded operating system use करते हैं. कस्टमाइज किया जाता है इसको टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम. जो रिक्वायरमेंट होता है उस रिक्वायरमेंट वाइज इसको कस्टमाइज किया जाता है, दैट ऑपरेटिंग सिस्टम. तो दैट इज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम. एग्जांपल्स क्या है? VxWorks एम्बेडेड लाइनक्स और विंडोज एम्बेडेड कॉम्पैक्ट. ये सारे एग्जांपल्स ऑफ विंडोज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की. नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग. हार्डनिंग मतलब क्या होता है? टफ. जैसे आपने सुना एक रूम होता है स्ट्रॉन्ग रूम. हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म स्ट्रॉन्ग रूम? स्ट्रॉन्ग रूम कहाँ यूज होता है? थिंक ऑन इट. इट इज यूज इन बैंकिंग सिस्टम. वहां पे जो रूम्स होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो इजीली यू कैन नॉट पेनिट्रेट ओवर देयर. तो ऐसे ही यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग होता है. यहाँ पे क्या होता है? जो अटैक होता है उसको हम क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं बाय रिड्यूसिंग इट्स अटैक सरफेस. ऐसे कैसे करते हैं? अप्लाइंग सिक्योरिटी पैचेस एंड अपडेट्स रेगुलरली, तो ताकि अटैक ना हो. कॉन्फ़िगरिंग सिक्योरिटी सेटिंग्स टू मिनिमाइज वल्नरेबिलिटीज. Disabling unnecessary services and features, implementing strong authentication and access controls, using firewall and intrusion detection system, employing encryption for sensitive data. इतनी सारी चीजें हम करते हैं. क्या करते हैं? ताकि it's not be, it cannot be attacked by the attacker. ठीक है? तो या if attacker can attack, तो it should be reduced. ये नहीं कोई भी अटैक कर रहे हैं. ठीक है? तो it should be tough to attack. That's the thing. तो क्या कहते हैं? उसको हार्ड किया जाता है. हार्ड कैसे करते हैं? by implementing various security measures. By implementing various security measures. These are the security measures. Security measures. These are the security measures. Security patches use करते हैं. Security settings चेंज करते हैं. उसके बाद unnecessary services को डिसेबल करते हैं. Okay, implementing strong authentication and access controls, using firewall, intrusion detection system, encryption for sensitive data. कोई भी डेटा हो, इंपॉर्टेंट डेटा हो, तो उसको एनक्रिप्ट किया जाता है. सिंपल. Okay. Next question is what?
Explain error handling with example. Explain error handling with example. Leave this thing, error handling. Okay, that we'll discuss later on. Explain SYN flood attack. What is polymorphic virus? वो important है. SYN flood attack और एक है polymorphic virus. These are important. SYN flood attack is a type of denial of service. Is a type of denial of service attack where an attacker sends a succession of SYN requests to a target system in an attempt to consume enough server resources to make the system unresponsive to legitimate traffic. Understood? इसमें क्या करता है, अटैकर सेंड्स अ सक्सेशन ऑफ सिन रिक्वेस्ट भेजते हैं टारगेट सिस्टम में इन टू कंज्यूम इनफ सर्वर रिसोर्सेज. सर्वर रिसोर्स जो है उसको कंज्यूम कर लेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये द सिस्टम विक्टिम सिस्टम जो विक्टिम हो गया उसका सिस्टम क्या होता है, रिस्पॉन्सिव नहीं होंगे टू लेजिटिमेट ट्रैफिक. जो इंपॉर्टेंट ट्रैफिक है उसमें उसके लिए वो रिस्पॉन्सिव नहीं होंगे. सिंपल. अंडरस्टूड. उससे क्या होगा, दिस कॉज द सर्वर टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर ईच इनकम्प्लीट कनेक्शन ultimately leading to resource exhaustion and unavailability of resources services, unavailability of services. जब unresponsive जब एक सर्वर, it is a, you can say server attack on server you can say. अब हम क्या करते हैं, सर्वर होते हैं और एक यूजर होते हैं. यूजर जब सर्वर पे अटैक हो गया तो क्या होगा, सर्वर पे अटैक हो गया और वो जब रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिनाइल ऑफ सर्विस होगा. डिनाइल ऑफ सर्विस ऑटोमेटिकली डिनाइल ऑफ सर्विस. तो दैट्स व्हाई इट इज अ सिन फ्लड अटैक. इसको सिन फ्लड अटैक बोलते हैं. नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिक वायरस. A polymorphic virus is a type of malicious software. A polymorphic virus is a type of malicious software that has the ability to change its underlying code without altering its basic function. Okay, वो कोड को चेंज कर देते हैं लेकिन बेसिक फंक्शन सेव रहते हैं. दिस कैपेबिलिटी allows the virus to evade detection by traditional antivirus programs and relying on recognizing specific signatures. By modifying its appearance each time it replicates, the virus becomes more challenging to identify and remove. ठीक है, वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं और मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिस्टम. तो फिर क्या होता है, इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव. दिस टेक्निक इज कॉमनली एम्प्लॉयड बाय सोफिस्टिकेटेड मैलवेयर टू इंक्रीज इट्स लॉन्जिविटी एंड इफेक्टिवनेस इन कॉम्प्रोमाइजिंग सिस्टम्स. सिस्टम में रहने के लिए यूज होते हैं. सांबा वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक्चुअली प्रैक्टिकल में यूज होते हैं. प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल. आप प्रैक्टिकल पेपर आप यदि देखोगे, मेरा लेक्चर्स देखोगे तो यू कैन फाइंड द सांबा. सांबा आई हैव एक्सप्लेन दिस इन डिटेल. What is Samba? Samba is an open source suite. Samba क्या है? It's open source suite that enables and end users to access and use files, printers, and other commonly shared resources between different operating systems. Okay, it allows file and print sharing between computers running Windows, Mac OS, or Unix operating system. Samba uses the SNMP CIFS protocol, which stands for Server Message Block or Common इंटरनेट फाइल सिस्टम. माने क्या होता है, एक सिस्टम हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस यूज कर सकते हैं. सांबा, ठीक है, कॉमनली शेयर रिसोर्सेस. ओके, फाइल्स, प्रिंटर्स, ये सब एक्सेस कर सकते हैं. दैट इज सांबा. अब वायरस एंड इट्स सिम्टम. वायरस क्या है? वायरस इज अ टाइप ऑफ, वायरस को एक शॉर्ट नेम होते हैं, फुल वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस. Under siege. You can say DOS, denial of service. It is a type of malicious software that replicates itself. One sec, please. It is a type of malicious software that replicates itself by modifying other computer programs and inserting its own code. खुद की कोड वहाँ पे इंजेक्ट कर देना. Simple. It can spread from one computer to another using causing harm to data, software, or hardware. Commonly symptoms of computer virus include slow computer performance slow हो जाते हैं, frequent computer crashes, unusual error messages, unexpected pop-up windows, and the presence of unfamiliar files or programs. ये तो सिंपल है. Right short cyber pornography and email bombing. Cyber pornography क्या होता है? Refers to the distribution and consumption of pornographic material via digital media, including website, social media, email, and other online platforms. इसमें क्या होता है, बहुत सारा उसमें मीन्स क्या होता है, वायरस छोड़ा जाता है या मीन्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लिए जाते हैं. अंडरस्टूड. इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटल टू क्रिएट, शेयर एंड एक्सेस explicit content. It is a digital
It is significant concern in terms of its potential negative impact on individuals, especially children and adolescents, and its contribution to the objectification and exploitation of individuals. Okay, इंपॉर्टेंट है. उसके बाद है ईमेल बॉम्बिंग. ईमेल बॉम्बिंग क्या होता है? लार्ज वॉल्यूम ईमेल किसी को भेज देना. लार्ज वॉल्यूम ऑफ ईमेल, वॉल्यूम, इट इज नॉट काउंटेड, तो वॉल्यूम में बोला जाता है. ईमेल बॉम्बिंग इज अ फॉर्म ऑफ साइबर अटैक where the attacker sends a large volume of email to the target's email address or server, overwhelming the recipient's inbox and potentially causing the email server to cross. ईमेल सर्वर को क्रैश करने के लिए यूज होते हैं. This can disrupt the normal functioning of the email service and create inconvenience or loss of data of the target. Email bombing is often used as a form of harassment or to disrupt communication within an organization or among individuals. Obviously, जब आप बहुत सारे ईमेल्स होंगे उसको डिलीट करना है. ईमेल्स बहुत सारे आपके आते हैं, स्पैम में बहुत डेटा, बहुत ईमेल आते हैं आप लोग के ईमेल आईडी में, यू हैव सीन. तो क्या करें, उससे हैरेसमेंट भी होते हैं, फॉर्म ऑफ हैरेसमेंट. डेटा भी लॉस हो सकते हैं क्योंकि यू आर डिलीटिंग and you may delete information, data also, important information also from the email. So these are the things happens while if anybody bomb email bombing करे तो. एक होता brute force computation. This is very important. तो brute force क्या है? Brute force computation, brute force मतलब क्या होता है? इट इज ए मेथड यूज इन क्रिप्टोग्राफी एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी टू क्रैक पासवर्ड्स. आप पासवर्ड क्रैक करने के लिए क्या होगा, पहले क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन सारे गैदर किया जाता है. पहले वी गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन अपॉन इंडिविजुअल. उसके बाद अलग अलग कॉम्बिनेशन लगा के वी ट्राई टू सर्च द पासवर्ड. तो दैट इज ब्रूट फोर्स कॉम्बिनेशन, यू कैन से चेकिंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस until the correct one is found. इसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स कंप्यूटेशन. It involves trying every possible key or password until the correct one is discovered, which can be time consuming and resource intensive. Obviously, आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाओगे तो it is time consuming. Brute force attacks are often mitigated through the implementation of strong security measures such as using complex and lengthy passwords or employing encryption techniques that are resistant to such attack. तो डिफरेंट टाइप्स मीन्स क्या होते हैं, आजकल जब भी वी क्रिएट ईमेल आईडी और जो वट एवर यू डू, तो दे सजेस्ट व्हाट टाइप ऑफ पासवर्ड शुड बी देयर, like it should be upper case, it should be added in lower case, you should have special symbols, it should have numericals, numbers. तो ये सारा कॉम्बिनेशन करके वो बोलते हैं जो पासवर्ड क्रिएट कीजिए सो दैट इट इज रेजिस्टेंट टू सच अटैक्स. अंडरस्टूड? एनालॉग वर्सेस डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन. एनालॉग क्या होता है? एनालॉग डेटा इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स व्हिच आर कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस जो है ये है कंटिन्यूअस, एनालॉग है. और डिजिटल में क्या होगा? ओके, डिजिटल में क्या होगा? डिस्क्रीट. डिजिटल इज फॉर डिस्क्रीट. ओके, दिस टाइप ऑफ often used in older companies. पहले यूज होता था एनालॉग. अब डिजिटल में क्या होता है? Involves transmitting data in the form of discrete signals representing in binary zeros and ones. Digital transmission is more commonly used in modern communication system as it provides better reliability, less susceptibility to interference, and easier error detection and correction compared to analog transmission. इसमें error detection correction easily कर सकते हैं हम, but analog में थोड़ा difficult है. आप कंटिन्यूअस एनालॉग इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, एक मैं डायग्राम बनाता हूं. दिस इज कंटिन्यूअस. ओके, अब एनालॉग कैसे होते हैं? एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट. एक्चुअली आप यदि ज्वाइन करोगे तो वही बन रहे ना. ओके, so what I'm doing, if I join, I will get the continuous signal. Continuously हम discrete बनाते हैं. We create the discrete thing. This is discrete. Okay. Now, what is network security? Why it is important? ये तो आपको network security क्या refers to the practice of securing a computer network infrastructure from unauthorized access, misuse, modification और denial of service. यही तो होता है computer network security. Okay. अब importance क्या क्या है? Data आपको protect किया जाता है. Okay, you can take a screenshot also. Do not worry. एक होता prevention of server attack.
बिजनेस कंटिन्यूटी, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ना आए, रेगुलेटरी कंप्लाइंस, ये क्या होता है, मेनी इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर बाउंड बाय रेगुलेटरी मेजरमेंट, कुछ रूल्स होते हैं उस वो रूल्स फॉलो करके ही उसको काम करना है, ठीक है। मेजर्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर डेटा, कंप्लायंस विद दिस रेगुलेशंस इज नेसेसरी टू अवॉइड लीगल रिपरकशंस एंड फाइनेंशियल पेनल्टीज। फिफ्थ है प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरनल थ्रेट, इंटरनल थ्रेट मतलब एम्प्लॉयज और कॉन्ट्रैक्टर्स अनऑथराइज एक्सेस करके, जैसे देर आर सो मेनी एम्प्लॉयज, तो अलग अलग एम्प्लॉयज की अलग अलग एक्सेस कंट्रोल रहेंगे, तो अनऑथराइज यदि कोई किसी और की, ए की एक्सेस कंट्रोल कुछ और है, बी की समथिंग एल्स इज देयर, तो बी का वो एक्सेस कंट्रोल करना चाहता है ए, तो अनऑथराइज एक्सेस होंगे, तो ये क्या है, दीज आर इंटरनल थ्रेट्स यू कैन से। सिक्योर रिमोट एक्सेस विद द राइज ऑफ रिमोट वर्क, मैंने घर पे बैठ के जो करते हैं, एंड क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, network security has become even more critical in securing remote access to the network, ensuring that only authorized users can access company resources securely. Seventh is safeguarding network infrastructure, ठीक है। Network security protects the network infrastructure itself, including routers, switches, and other network devices from attacks that can disrupt network communication and compromise the overall network functionality. Number 8 is maintaining trust and reputation. Obviously, a strong network security framework क्या करते हैं? Enhances computer trust, customer trust and confidence in an organization's ability to protect their data, thereby safeguarding the company's reputation and brand value. Protect करके रखोगे तभी तो then only it enhances the computer customer trust. Understood? Now, what is malware? What kinds of precautions can you use to overcome the virus problem? Malware क्या होता है? Any software refers to any software intentionally designed to cause damage to a computer, server, client or computer network. उसको malware बोलते हैं. It is designed to cause damage only. Okay? It encompasses a variety of hostile or intrusion software, including computer virus, worms, Trojan horses. These are all softwares only. ओके, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर एंड अदर मैलिशियस प्रोग्राम्स, ये सब ह्यूमंस क्रिएट करते हैं, अटैकर क्रिएट करते हैं, सो दैट दे कैन इंटेंशनली कॉज डैमेज टू एनीबडी. Malware can be used to steal sensitive information, gain unauthorized access, or disrupt computer operations. To protect your system from malware, here are some precautions. क्या क्या precautions है? Install antivirus software, keep operating system updated, ये सब रखना जरूरी है. Use a firewall. Be cautious with email attachment. Be very careful. Emails can be dangerous. Exercise caution when browsing. Okay, avoid clicking on suspicious links or pop-up ads, and be cautious when downloading files from the internet. ये सब याद रखना पड़ेगा. Use strong passwords, regular backup, enable pop-up blockers, educate yourself, use content filtering, okay, to block access to malicious websites and filter out potentially harmful content. तो ये सारी चीजें आप लोगों को करना पड़ेगा so that you can overcome the virus problem. These are the things, and आपको सारे ही लिखने पड़ेंगे पेपर में. Next is computer virus involves various stages right from its design to implementation. Explain these stages. वायरस के क्या क्या स्टेज होता है? क्या डिजाइन एंड क्रिएशन, पहले उसको डिजाइन किया जाता है. उसमें क्या था कॉन्सेप्ट? दिस इज इनिशियल स्टेज वेयर द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग ए कंप्यूटर वायरस इज कंसीव्ड. द क्रिएटर मे हैव डिफरेंट मोटिवेशंस सच एज कॉजिंग हार्म, स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन और सिंपली फॉर एक्सपेरिमेंटेशन. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. ओके. सेकंड इज प्लानिंग. इन दिस फेज द क्रिएटर प्लान द स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड इम्पैक्ट ऑफ द वायरस. कितने इम्पैक्ट होना चाहिए? दिस में इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द टारगेट सिस्टम, मेथड ऑफ प्रोपेगेशन एंड पोटेंशियल इवेजन टेक्निक टू अवॉइड डिटेक्शन. थर्ड इज डेवलपमेंट. उसके बाद सेकंड इज डेवलपमेंट. इसमें तो प्लानिंग होगी, उसके बाद डेवलपमेंट. उसमें क्या होता है? कोडिंग होगा, टेस्टिंग होगा. ओके. एक्चुअल कोडिंग ऑफ द वायरस टेस्ट प्लेस हियर. उसके बाद टेस्ट किया जाता है वायरस प्रॉपरली बिहेव कर रहा और इट इज वीक. इफ इट इज वीक तो फिर उसमें कोडिंग प्रॉपर किया जाता है, फिर चेंजेस करना जाता है कोडिंग में. उसके बाद थर्ड क्या होता है? डिप्लॉयमेंट एंड प्रोपोगेशन. डिप्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा. दिस वायरस डिस्ट्रीब्यूट टू द टारगेट सिस्टम थ्रू वेरियस means such as email attachment, infected files or compromising websites. It may also exploit vulnerabilities in the system to gain unauthorized access. Propagation क्या होता है? Was the virus infected system, it starts to spread to other connected system. सब में spread होने की कोशिश करेंगे. That's the thing. Fourth is execution and payload delivery.
अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक्टिवेट किया जाता है पहले, द वायरस ट्रिगर्ड टू एग्जीक्यूट इट्स इंटरनेट पेलोड विच में इंक्लूड डिलीटिंग फाइल्स। पेलोड में क्या होगा, डिलीटिंग फाइल्स, करप्ट डेटा और स्टीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जिसके लिए वो वायरस को रखा गया। तो दोज थिंग्स आर या दोज थिंग्स एक्ट हो गई है, एक्टिवेशन होते ही ये सारी चीजें वो करने लगेंगे जिसके लिए वो वायरस बना है। ओके, पेलोड डिलीवरी, द पेलोड मे बी डिलीवर्ड ऑल एट वंस और ग्रेजुअली टू अवॉइड डिटेक्शन। Yeah, okay. It will do certain step by step, not at one go. Okay, depending on the objective of the virus creator. Okay, वायरस जिस तरह से क्रिएटर जैसे बनाया, जैसे स्लोली पैसिवली डेटा को कलेक्ट करना या एक्टिवली डेटा को कलेक्ट करना, तो ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय द वायरस क्रिएटर। फिफ्थ इज डिटेक्शन एंड कंटेनमेंट, आइडेंटिफिकेशन। अब उसके बाद क्या होता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कैसे, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिटेक्ट द वायरस बाय एनालाइजिंग इट्स बिहेवियर, कोड पैटर्न्स और सिग्नेचर। वंस डिटेक्ट द वायरस इज आइसोलेटेड फॉर फर्दर एनालिसिस, उसको आइसोलेट अकेले कर दिया जाता है। अंडरस्टूड द वे हमारा जो कोरोना वायरस था, जब जैसे ही किसी को कोरोना वायरस इन्फेक्ट हो गया उसको क्या किया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता है। इन दैट वे द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर, द सेम थिंग। देन इज कंटेनमेंट। कंटेनमेंट में क्या होता है, measures are taken to prevent further spread of the virus, often involving isolating infected file systems, removing the virus, and implementing security patches to fix vulnerabilities. Sixth is elimination and prevention. ये सारे steps है। Elimination में क्या होगा, रिमूव किया जाएगा, वायरस को रिमूव किया जाएगा यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, रिस्टोरिंग फ्रॉम बैकअप और रीइंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। Then prevention. Measures are taken to prevent future infections, including updating software, using firewall, employing antivirus software, and educating users from about safe computing practices. Simple. Reconnaissance attack तो हमने बात कर चुके हैं। उसमें क्या होता है, और एक्सप्लेन इन फोर, चार अटैक्स है। एक होता है नेटवर्क स्कैनिंग, एक होता है ओएस फिंगर प्रिंटिंग, थर्ड इज सोशल इंजीनियरिंग, फोर्थ इज डीएनएस रिकॉग्निजेंस। ओके, तो लेट्स डिस्कस रिकॉग्निजेंस। तो आपको समझ में आ गया व्हाट आर रिकॉग्निजेंस, दैट इन्वॉल्व्स गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। गैदरिंग मैंने पहले ही बोला, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ टारगेट और नेटवर्क। अब उसमें क्या होता है, फर्स्ट है नेटवर्क स्कैनिंग। इसमें क्या करते हैं, इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई एंड मैप आउट द वेरियस डिवाइसेस एंड systems connected to a network. Connected to a network. Attackers use network scanning to discover information about the network's structure, potential entry points, and vulnerabilities that can be exploited. By scanning for open ports, services, and vulnerabilities, attackers can plan their next step more effectively. Second is OS fingerprinting. Is a technique used by attackers to determine the operating system running on a particular host. By analyzing various network packets and responses from the target system, attackers can deduce the type and version of the operating system. This information helps attackers tailor their subsequent attack to target specific vulnerabilities associated with the identified operating system. पहले उसको ऑपरेटिंग सिस्टम जानना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो उसको पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट करने की जरूरत होती है। व्हेन दे डिटेक्ट इट, दे जैसे लाइनक्स है, सपोज विंडोज है, उसके बाद विंडोज एक्सपी है, विंडोज का भी बहुत सारा वर्जन है। उसको जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बारे में पता चल गया, ओके, तो उसके पास किस टाइप का अटैक करेगा, वो सारे कोड्स एवरीथिंग इज प्रेजेंट। जैसे विंडोज एक्सपी है, पहले विंडोज एक्सपी चलता था, तो विंडोज एक्सपी का जो भी कोड प्रिपेयर्ड है उसको भेज दिया जाता है, so that they can attack it very easily. That's the thing. Third is social engineering. इसमें क्या होता है, while not traditionally considered a part of technical, social engineering involves manipulating individuals into divulging sensitive information or performing actions that compromise the security of the system. कैसे मैनिपुलेट करेंगे, जैसे यू कैन टेक एन एग्जांपल, जैसे देयर इज आईफोन 15, इट कॉस्ट 80,000 ऑलमोस्ट, ओके, एक लिंक दे दिया, उस लिंक में उन्होंने बोल दिया जो मीन्स आप यू कैन पे फॉर 30,000 एंड यू कैन बाई इट, ओके। तो लोग क्या करते, लोगों का मन में लालच आ जाते, ओके, एंड दे बाई इट, ओके। तो परफॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन दैट कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी सिस्टम, और उसके सारे इन्फॉर्मेशन चला जाता है, ओके। द विक्टिम वोंट गेट दैट थिंग, विक्टिम को वो नहीं मिलेगा, जो मीन्स आईफोन तो मिलेगा नहीं, उसका उल्टा उसकी इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, उल्टा उसका डेटा चला जाएगा, उल्टा पॉसिबली उसकी जो फाइनेंशियल लॉस होगा ये भी हो सकता है, ओके। दिस आर थिंग्स। फोर्थ इज डीएनएस रिकॉग्निजेंस. Domain name system reconnaissance involves gathering information about targets, domain names,
and associated networks infrastructure. Attackers use various techniques such as DNS, zone transfer, DNS queries, and reverse DNS lookups to collect information about targets domain names. Okay, IP address and server configuration. पूरे information ले लो. This information can help attackers identify potential vulnerability and misconfiguration within the target's DNS infrastructure. जब सब कुछ मिल जाएगा तो फिर they can attack. That's the thing. It is concerned with domain name system. Then what is cryptanalysis? Explain in brief differential and linear cryptanalysis. Important है. Cryptanalysis क्या है? It is the study of techniques used to decipher the meaning of the encrypted information without access to the secret information that is required to do so. The goal is to find weakness or vulnerability in the cryptographic system and to exploit them to gain unauthorized access to the encrypted data. ये जो cryptanalysis जो term है, ये कौन यूज करते हैं? सपोज एक मैसेज है उसको एनक्रिप्ट किया गया, देयर इज ए कंपनी ए या एक बंदा है उसने एनक्रिप्ट किया, अब वो खुद ही उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की कोशिश करेगा. ओके, अब टू व्हाई टू गेट अनऑथराइज्ड एक्सेस? टू चेक द वीकनेस, टू फाइंड द वीकनेस और वल्नरेबिलिटी इन द क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स. उसको वीकनेस क्या है, उस वीकनेस को ढूंढने के लिए. अंडरस्टूड? अब डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस क्या है? इट इज ए पावरफुल टेक्निक यूज्ड टू ब्रेक सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर. सिमेट्रिक की में क्या होता है? सिंगल की, टू गेन द इंफॉर्मेशन. और एसिमेट्रिक में क्या होता है? तो दो कीज की जरूरत होता है, एक प्राइवेट होता है, एक पब्लिक होता है. सिंगल की मतलब क्या होता है? प्राइवेट की होता है. या आगे के पेपर्स में, अब देयर विल बी मोर पेपर्स, तो उस पेपर में वी विल बी डिस्कसिंग सिमेट्रिक एसिमेट्रिक मोर प्रॉपर्ली. It focuses on analyzing the changes in the input and output pairs of the encryption function. By studying how the changes propagate through the encryption, cryptanalysis can deduce information about the secret key. Differentiation is particularly effective against ciphers and do not sufficiently mix the input data. ये एक्चुअली एक बात याद रखो, इट इज यूज्ड टू ब्रेक द सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर्स, एनालाइज द चेंजेस इन द इनपुट एंड आउटपुट पेयर्स ऑफ द एन्क्रिप्शन फंक्शन. ये सारी चीजें. अब लीनियर में क्या है? It is used to break block ciphers. It is used to break block ciphers. Okay, it is used to break blocks. It works by finding linear approximations of the behavior of the encryption algorithm. Encryption algorithm की behavior. This is the important behavior. How it is behaving? By observing how certain input and output bits correlate, cryptanalysis can make educated guesses अबाउट द सीक्रेट की. गेस हो जाएंगे, उससे गेस हो जाएगा, बिहेवियर पता चलेगा, इनपुट एंड आउटपुट से बिहेवियर पता चल जाएगा उसकी. द लीनियर क्रिप्टोनालिसिस इज इफेक्टिव अगेंस्ट साइफर्स दैट एग्जिबिट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट एंड द की. बोथ ऑफ दिस टेक्निक्स आर यूज्ड बाय क्रिप्टोनालिसिस टू एक्सप्लॉइट वीकनेस इन द encryption algorithm, and they have significantly contributed to the advancement of cryptographic security by exposing vulnerabilities that need to be addressed to ensure the strength of the encryption systems. Now, what is the difference between firewall intrusion detection system and intrusion prevention system? ये दो चीजें हैं. ये क्या? These are the vital components for comprehensive cyber security strategy. ये cyber security strategy है, but they serve different purposes in protecting the network. कैसे? अब firewall क्या होता है? It is a network security that monitors and controls incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules. रूल्स आप डिफाइन करोगे, उसी रूल्स को फॉलो करके. एक सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, जो रूल्स आप उसको बोलोगे उसी रूल से कोई एंटर करेगा, उसी रूल से कोई बाहर जाएगा. सिंपल. Its main function is to establish a barrier between the trusted internal network and an untrusted external network, such as the internet. Firewalls can be implemented as hardware, software, or a combination of both, and they can operate at the network level 3 of the OSI model. Network level 3, ये सब बातें लिखोगे, important information. Network level 3 of the OSI model, वहाँ पे use होते हैं. They analyze packet headers and enforce access control policies to block unauthorized access while allowing legitimate traffic to pass through. Simple. You can say the security guard. Firewall का security guard बोल सकते हो. Security guard. एक होता है intrusion detection system. अब intrusion detection system क्या होता है?
आप यू मस्ट हैव वॉच इन द इंग्लिश मूवीज ऑल्सो। किस तरह की इंग्लिश मूवी एक था, लेट मी टेल यू द नेम ऑफ द मूवी, जिसमें मीन्स पर्ज, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम मूवी पर्ज, PURGE, पर्ज। पर्ज एक मूवी है, उसमें क्या होता है मीन्स जैसे एक एक लोकेलिटी है, एक सिटी है, तो सिटी में एवरीबडी इज एवरीवन्स फ्रेंड, इट्स नॉट दैट थिंग। फैमिली में एवरीबडी लाइक्स ईच अदर, इट्स नॉट दैट थिंग। देयर मे बी ग्रजेस इन बिटवीन फैमिली, इन बिटवीन फैमिली पीपल, इन बिटवीन अदर पीपल, देयर मस्ट बी ग्रजेस। तो क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट गिव्स वन डे टू bring out their rage. देयर इज नो पुलिस, देयर इज नो लॉ फॉर दैट डे। तो लोग क्या करते हैं, उसके पहले क्या करते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम फॉलो करते हैं। उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स, जैसे बेल, उसके बाद गेट में कुछ स्पेशल कुछ सिस्टम्स डाल देना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से कोई इलेक्ट्रिक गेट कंस्ट्रक्ट करना या समथिंग लाइक दैट। इस तरह का बहुत सारी चीजें करते हैं, सो दैट कोई अंदर से बाहर से अंदर ना आ पाए। अंडरस्टूड? बिकॉज किसी न किसी का तो कोई ना कोई दुश्मन होगा जो उस दिन ये करेगा, मीन्स अपना जो पर्ज है, अपना जो गुस्से रेज है, वो निकालना चाहेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है। ओके, इसमें क्या होता है, और सिस्टम एक्टिविटी फॉर मैलिशियस एक्टिविटी और पॉलिसी वायलेशन एंड जनरेट्स रिपोर्ट्स टू द मैनेजमेंट सिस्टम। इट वर्क्स बाय एग्जामिनिंग नेटवर्क ट्रैफिक एंड आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स एंड मे इंडिकेट एज इंट्रूजन और वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज। इंट्रूजन ना हो पाए, एंट्री ना कर पाए कोई बाहर के दुश्मन, तो उसके लिए हम इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यूज करते हैं। ये क्या करता है, यूजिंग अनलाइक ए फेडरल आईडीएस डजंट एक्टिव ब्लॉक और प्रिवेंट अनऑथराइज्ड ट्रैफिक, इंस्टेड इट डिटेक्ट्स एंड अलर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स अबाउट पोटेंशियल थ्रेट। अलर्ट करते हैं सच एज सस्पिशियस पैटर्न्स, सिग्नेचर्स और एनोमलीज इन द नेटवर्क ट्रैफिक। अब एक होता है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ये क्या होता है, इट इज एडवांस सिक्योरिटी टूल दैट नॉट ओनली डिटेक्ट बट आल्सो एक्टिवली प्रिवेंट आइडेंटिफाई थ्रेट्स। इट वर्क्स साइमल्टेनियस टू एन आईडीएस बट हैज द एडेड कैपेबिलिटी टू टेक इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन लेंगे upon detection of malicious activities. Okay, this can include blocking or filtering malicious traffic, reconfiguring the firewall, or other active responses to prevent the exploitation of various vulnerabilities. An IPS can be considered an extension of a firewall. Extension of a firewall here. Understood? Up next, advertisers can have to take extra care when advertising for children. What are the legal and ethical issues involved in advertising potentially harmful products and using psychological tactics to simulate demand? एक important question है। ओके, इसे मतलब मीनिंग क्या है, आई हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर व्हेन एडवर्टाइजिंग फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए तो यू हैव टू टेक वेरी ईच एंड एवरीथिंग द स्टेप्स टू बी टेकन केयरफुली। तो किस तरह के लीगल और एथिकल इश्यूज हो सकते हैं? ओके, इसमें एक रेगुलेशन एंड लॉ है। गवर्नमेंट ने कुछ लॉ क्रिएट किया, जैसे many countries have regulations and laws advertising to children, particularly for products that are potentially harmful, such as junk food, sugary drinks, or violent video games. Advertisers must comply with these regulations to avoid legal repercussions. इस तरह के कोई वायलेंट वीडियो गेम्स को ऐड कर रहा है बच्चों के लिए, तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए तो लीगली उसको बर्दाश्त और लीगली कुछ ना कुछ एक्शन होंगे। Number two, protection of minors. Ethical concerns revolve around the protection of minors from being exposed to harmful products or messages that might negatively influence their physical or mental well-being. Advertisers have the responsibility to promote products that contribute positively to children's health and development. Product वही वो promote कर सकता है that helps in the child's mental and mental development or health development, you can say. Number third is deceptive advertising practices, employing psychological tactics to simulate demand, such as misleading or deceptive advertising practices in both illegal and unethical. Advertisers must ensure that their marketing strategies are transparent and honest. Transparent होना चाहिए, especially when targeting children who may not fully comprehend the intent of the advertiser. बच्चों को तो पता ही नहीं होता जे what their intention is, what the other person's intention is. तो इसलिए क्या बोला, they are saying it should be transparent and honest. Fourth is moral responsibility. Moral responsibility मतलब advertisers have a moral responsibility to promote products that contribute to children's well-being and development. Promoting products that may have adverse health effects or negative behavioral impact can be considered a breach of responsibility. ये तो आप लोग क्लियर हो रहे। तो ऐसे बहुत सारा है, एक है पेरेंटल कंसेंट एंड इन्फ्लुएंस, एक होता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ओके,
7th इज सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट। तो ये सारे रेगुलेशंस है, ये सारे फॉलो करने पड़ेंगे फॉर एडवर्टाइजमेंट फॉर चिल्ड्रन, सिंपल। So these are the things, these are the questions that I have discussed. These are the ये questions यदि properly if you can do, तो these are, और कुछ आपको जरूरत नहीं पड़ेंगे। Please go through these questions, go through the lecture properly, and that is all. Okay, उसके बाद आगे जो टॉपिक्स आएंगे उसमें थोड़ा मैथमेटिक्स वगैरह होंगे, तो हम क्या करेंगे, विल बी एक्सप्लेनिंग द थ्योरी विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप लोग को और इंटरेस्टिंग लगेंगे। यहाँ पे तो काफी थ्योरी है, ओनली थ्योरी इज देयर बिकॉज इट इज इंट्रोडक्शन टू इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, लेकिन आगे आप लोग को और मजा आएगा। ठीक है, तो यू हैव टू गो थ्रू दिस। आप वट एवर आई हैव टॉट यू उससे आप लेक्चर नोट्स बना लीजिए, एंड एनीथिंग एक्स्ट्रा इज रिक्वायर्ड तो दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू, तो डू नॉट वरी अबाउट इट। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग द नोट्स, एग्जाम इज नॉकिंग एट द डोर। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।